Hello everyone, I welcome you all to the fourth lecture of Animal Ecology. Today in this lecture we are going to study about the types of ecosystem and particularly the aquatic ecosystem. So let's begin. So ecosystems are of basically two types, the aquatic ecosystem and the terrestrial ecosystem. आप लोग ये वर्ड्स पहले भी सुने होंगे. Aquatic means it is related to water, whereas terrestrial इसका मतलब होता है related to land. तो हम दो तरह के इकोसिस्टम देखेंगे, एक जो वाटर में होते हैं और दूसरे जो लैंड पे होते हैं. So first we are going to see today is aquatic system, ecosystem. So aquatic ecosystems are divided into two major types. The first one is a freshwater ecosystem and the second one is marine ecosystem और marine water ecosystem. Fresh water मतलब जहाँ पे हमारा पानी मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मीठा पानी. That means the water is not salty. और marine water means खारा पानी. So the examples for fresh water are like ponds, lakes, rivers, streams, etc. Whereas for marine water ecosystem the examples are like the deep sea, lagoons, estuaries, etc. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मराइन वाटर इकोसिस्टम के. Now let's see first the fresh water ecosystem. So for each ecosystem what we are going to do, we are going to see its abiotic factors and biotic factors. पिछले लेक्चर में हमने देखा था हर इकोसिस्टम का अबायोटिक फैक्टर होता है और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं. अबायोटिक फैक्टर्स हमने 5-6 फैक्टर्स लिस्ट किए थे, जैसे वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल etc., लाइट etc. whereas बायोटिक फैक्टर्स हमने 3 बताए थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स. तो डीकम्पोजर्स ये मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स में बैक्टीरियल फॉर्म्स ही रहते हैं, वो कोई बहुत चेंज नहीं होते हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड द डीकम्पोजर्स एज सच, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस और आई एम गोइंग टू एनलिस्ट the producers and the consumers for each ecosystem. So let's start with the first one, that is freshwater ecosystem, and we'll first see the abiotic factors of freshwater ecosystem. So there are 5 factors, abiotic factors, which are affecting freshwater. The first one is temperature. टेम्परेचर अफेक्ट करता है, कम रहेगा ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा एंड अकॉर्डिंगली इट विल अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स. जैसे कम होगा या ज़्यादा होगा, जैसे पोलर एरियाज़ के जो लेक रहते हैं वो उनमें बर्फ़ जम जाती है तो ऊपर की सतह जो टॉप लेयर है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस एंड द वाटर इनसाइड इज़ इन द लिक्विड फॉर्म बट इट इज़ कोल्ड. So temperature definitely affects, and thus the type of fishes or organisms living in such lakes will be different than the one which is seen in tropical areas or in the equatorial area. Then हमने जैसे rivers और stream की बात की थी. So the second factor is water flow. Water flow is playing role in case of freshwater systems like rivers, streams, creeks, etc. Then pH matters. Now pH of the soil also affects and the pH of water is also affected, and pH of water actually is dependent upon the dissolved gaseous content. Especially gaseous content may be CO2 particularly affects. CO2 combines with water to form carbonic acid and H2CO3 बनता है. H2O plus CO2, H2O plus CO2 gives rise to H2CO3, that is nothing but carbonic acid. एसिड का ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से एसिड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है.
सो ये अफेक्ट करता है pH. देन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ ओनली द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. There are hardly any organisms. अगर आप total if you talk about the total aquatic organisms, whether it is fresh water or marine water, there are hardly any organisms which come to the surface and breathe as compared to the organisms which uptake the dissolved oxygen. So dissolved oxygen matters. And then last one is light. जितना level तक penetrate करेगा light उसके accordingly चीज़ें change होगी. For example, this is a pond and the light is able to penetrate only till here, this line. So the organisms growing in this area, the organisms growing in this area will be of different type as compared to that of this area, because light is affecting the ecosystem. So these are the abiotic factors which are affecting freshwater ecosystem. Let's see the biotic factors. In freshwater ecosystem, producers are mainly blue-green algae, dinoflagellates and other phytoplanktons. Apart from that, water plants or aquatic plants are there which are going to be part of producers. Of course, again, which type of freshwater ecosystem we are considering, accordingly the producers are going to change. Like in river, they are not going to be much of the floating plants, but in case of ponds or on the periphery of lakes, definitely there will be rooted plants, rooted aquatic plants like lotus and all. Then primary consumers in case of freshwater ecosystems are shrimps. Shrimp मतलब prawn जैसे ही होता है, similar है crustacean. Gold fishes, small fishes रहते हैं, small crustaceans small जैसे daphnia, cyclops, then mayflies etc. These are nothing but the primary consumers. So these primary consumers are going to feed on the producers. Then the secondary consumers are the carp fishes, that is big fishes, dragonfly larvae, frog, big fishes like catfishes, then rohu, there's a spelling mistake, this is katla, rohu, katla and etc. These are some examples of secondary consumers, and these secondary consumers are going to feed on the primary consumers. Then finally the tertiary consumers are going to be like water snakes, heron or other birds which feed on the fishes or frogs. They will be coming into the tertiary consumers. So tertiary consumers are going to feed on secondary consumers. Now we have to remember one thing here, that producers occupy the first trophic level, primary consumers are occupying the second trophic level, and secondary consumers are occupying the third trophic level, whereas tertiary ones are the fourth ones. I hope this color is visible to you. So these are the four trophic levels which are seen in case of freshwater ecosystem. Now freshwater ecosystem can be further divided into two systems or two types, lentic and lotic. Lentic are the stagnant waters. So all the water systems where the water is stagnant are going to come under lentic water system. For example, pond or lakes. These are example of stagnant water. Stagnant मतलब रुका हुआ, बहता हुआ नहीं रहेगा, जो पानी रुका हुआ एक जगह रहेगा उसको हम बोलते हैं stagnant. So lentic system is nothing but the stagnant water, whereas flotic is the flowing water. So wherever the fresh water is flowing, that is going to come under the lotic ecosystem. अगर याद रखने के हिसाब से मैं बोलूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है अगर बाद में कि लेंटिक कौन सा था और लोटिक कौन सा था, तो आप ऐसे ही याद रखो, लोटिक इज़ फ्लो, लो फ्लो, ऐसे आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं. एक ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको, फ्लो लो. सो दिस इज समवेयर सिनोनिमस, होमोफोन जैसे साउंड एक जैसे कर रहा है. सो लोटिक इज समथिंग विच फ्लोज. ओके, सो लोटिक वाटर सिस्टम is nothing but the flowing water system. Example is river, streams, creeks, etc.
So these are the examples of low-tech water system. I have shown some pictures. This is the first one which you see. The first picture which you see is a very famous one, and you must have definitely seen it in some movies. This is the Pangong Lake in Ladakh. आपने बहुत सारी पिक्चर्स की इधर शूटिंग देखी होगी, जैसे जब तक है जहाँ या फिर 3 Idiots. There are lot of movies which have been shot over there. So this is a very famous lake. So it is lake. So since it is lake, it is a lentic system. Then this is one more lake which I have, the second picture which I have included. I just wanted to show you, it's not a lake, it's rather, I'm sorry if I called it as a lake, it is actually a pond. Because the difference between lake and pond is smaller in size and lake is larger in size. लेक जो है वो बड़ा रहता है, पॉन्ड जो है वो छोटा रहता है. तो देखिए आप यहाँ पे पॉन्ड जो है ये इतना छोटा सा ही है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ pond. Okay, so 2 examples of lentic water system, pond and lake I have shown. Now let's see examples of low-tech water system. I'm just showing the figures. This is an example of a river and this is an example of stream. I don't think it is visible there. Yeah, you can see it over here. So it is an example of stream and this is a example of river. इसके अलावा creeks भी होते हैं. creeks मतलब जो बहता हुआ river या stream है वो ऐसे खुले जगह पे, छोटे से जगह पे आएगा जो covered है. That is called as creek. But rivers and streams are the main ones. And इसमें भी rivers जो हैं ये ecosystem ज़रा ज़्यादा enhanced रहती है क्योंकि बड़ी है system, river बड़ा है, तो it makes a different and gives more coverage for different types of organisms to thrive in it. So these were the examples of freshwater ecosystem. Now let's move ahead with marine water ecosystem. So the abiotic factors which affect marine water are temperature. Again the temperature is affecting marine water. Water current plays over here. Oceanic currents रहती हैं. So oceanic currents are going to oceanic currents are going to play important role क्योंकि because of that the organisms which survive or thrive or they change or different organisms are found, they change according to the water current. Then in case of marine water, the one important factor is salinity. We know that marine water is saline, मतलब खारा होता है. So that is there. Then again dissolved oxygen. ठीक है, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात क्योंकि ये ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट जो है ये मराइन वाटर में सिर्फ अपर लेवल पे ज़्यादा रहता है. दिस इज़ द अपर सरफेस and as you keep on going down the depth, as the depth is increasing, the light as well as the dissolved oxygen content that goes on decreasing. तो ये लाइट और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये डिक्रीज होते जाता है with depth. Okay, so next is depth. The factor affecting is depth. How deep the water is, where the organism is surviving, how deep it is, and depending on the depth, again depth के वजह से pressure of water column acts. अब ये pressure of water column कैसे act करता है? 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है. ओके, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है और एक ऑर्गेनिज्म लेट्स से यहाँ है. 3 एग्जांपल्स मैंने दिए. ये जो रेड लाइंस हैं, दीज आर डिपिक्टिंग, अज्यूम करिए कि ये डिपिक्ट कर रही हैं वाटर कॉलम. तो अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर एक वाटर कॉलम है, पर वही अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर 2 वाटर कॉलम्स आ गई हैं. मैं ये जस्ट हाइपोथेटिकली आपको बता रही हूँ एग्जांपल. अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर 3 वाटर कॉलम्स आ गई हैं. ऐसे 1 और 2 और 3 ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है. मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जैसे जैसे डीप होते जा रहा है वाटर का कॉलम बढ़ते जा रहा है तो इसके ऊपर सबसे मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, इस पे उससे कम प्रेशर रहेगा और इस पे उससे भी कम प्रेशर रहेगा. तो इसका कहने का मतलब ये है, व्हाट आई मीन टू से इज एज यू गो डीपर द प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम इंक्रीजेस. So more the depth,
ऐसे बोलेंगे, more the depth, more is the pressure. Okay, so these are the factors affecting marine ecosystem. Now let's see the biotic factors. The producers are mainly the blue-green algae, dinoflagellates, diatoms and other फाइटोप्लैंक्टन्स. ये बहुत मेजर ये प्रोड्यूस करते हैं, मेजर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर एक्चुअली द वंस विच आर फिक्सिंग द मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन इन the atmosphere. So marine phytoplanktons are actually responsible for formation of the oxygen layer in Earth's atmosphere. So they play an important role. So these are the producers. Then the primary consumers are like jellyfish, then Physalia. Physalia is nothing but Portuguese man of war. Then small crustaceans like prawns, shrimps, etc. and other zooplanktons also. Now zooplanktons means animal cells रहेंगे इसलिए zooplanktons, plant cell रहेंगे इसलिए phytoplanktons. Okay, then I think here I can explain you the concept of plankton, nekton, neuston. In aquatic ecosystem there are three terms which are used. The first one is plankton, the second term is nekton, sorry not nekton, neuston is the first, second one neuston, and third one is nekton. Okay, plankton, neuston, nekton. प्लैंक्टन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन नॉट अपोज द वाटर करंट, दे आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट अपोज द वाटर करंट. जैसे पानी बहेगा उसके साथ वो बह के जाएंगे. तो ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं. जनरली मैं बोल रही हूँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है, जनरली ये यूनिसेल्युलर रहते हैं या मल्टीसेल्युलर रहेंगे, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहेंगे. न्यूस्टन जो है ये प्लैंक्टन से बड़े रहते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन इतने बड़े वापस नहीं रहते हैं कि ये अपोज एग्जैक्टली कर सके वाटर का करंट को, पर कुछ हद तक ये अपोज करके स्विम कर सकते हैं. पूरा कंप्लीटली नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये स्विम कर सकते हैं. न्यूस्टन के वापस दो टाइप हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूस्टन्स, एपीन्यूस्टन एंड हाइपोन्यूस्टन. सॉरी, एपीन्यूस्टन एंड हाइपोन्यूस्टन. न्यूस्टन का ये एक फीचर रहता है कि न्यूस्टन जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये अगर वाटर की सरफेस है तो न्यूस्टन जो है वो ये वाटर के सरफेस के आसपास रहते हैं. इवन प्लैंक्टन्स भी रहते हैं, लेकिन न्यूस्टन्स जो है ये पर्टिकुलरली वाटर के सरफेस के पास रहते हैं. अगर ये वाटर के सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स आते हैं इसमें जैसे वाटर स्ट्राइडर्स एंड ऑल, तो हम उनको बोलेंगे एपीन्यूस्टन, क्योंकि आपने ये प्रीवियस क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा. एपी मीन्स अबाव. ओके, एपी मीन्स अबाव, whereas hypo means below. You must be studying this in your botany also, like epi and hypo positions of thalamus, epithalamus, I think if I am right, epithalamus and hypothalamus you study. वेल ये याद रखिए आप लोग, एपी मीन्स अबाव एंड हाइपो मीन्स बिलो. तो अगर अबाव द वाटर सरफेस है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एपीन्यूस्टन है, और अगर बिलो द वाटर सरफेस है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोन्यूस्टन है. ओके, सो हमने प्लैंक्टन देख लिया, नेक्टन देख लिया, सॉरी न्यूस्टन देख लिया. अब हम नेक्टन देखेंगे. नेक्टन मीन्स द बिगर ऑर्गेनिजम्स विच कैन अपोज, विच कैन स्विम इन अपोजिशन ऑफ द वाटर करंट. जैसे बड़ी फिशेस कि पानी एक डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है पानी, तो they can flow against the flow of water. So nectons are the big fishes. So there are three basic types of organisms in any aquatic ecosystem, that is plankton, neuston and nekton. Neuston is again of two types, epineuston and hyponeuston. I hope you have understood this. If you have not understood this, please let me know. Okay, so we were seeing the primary consumers. So planktons are of two types, zooplanktons and phytoplanktons. Phytoplanktons are producers, whereas zooplanktons are the primary consumers. So primary consumers are going to depend on the producers. Producers are the first trophic level, primary consumers are the second trophic level. Now secondary consumers consist of fishes, corals, penguins, whales, etc. And they are going to occupy the third trophic level. They are going to feed on the primary consumers. Then fourth trophic level is nothing but of the tertiary consumers, which includes leopard seal, killer whales and sharks.
ये टर्शरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे. So this is the main biotic factors of marine ecosystem. Now actually marine ecosystem is of 6 types, although we are not going to see things in detail, but there are 6 types. First is intertidal zone. ये actual sea के बीच में आते हैं कि intertidal zone upper layers रहते हैं. Then deep sea and sea bed, इसमें अलग तरह के organisms ecosystems मिलती हैं हमको, ecosystem अलग है वो. Then coral reef support different type of ecosystem and it is one of the most highly diverse ecosystems of the world. Water में अगर हम बात करेंगे, अगर aquatic ecosystems की बात करेंगे तो उसमें coral reefs are one of the very high biodiversity showing ecosystems. Then lagoons, I'll be showing you the pictures of lagoons, water lagoons I'll explain at that time. Salt marshes, ये generally area marshy area रहता है जहाँ पे sea and river water मिलते हैं. Same way mangroves are the area, again the delta regions. ये marshes and mangroves, these are mostly found near the delta region. So these are the types of marine ecosystems. I'll show you some pictures now. This is example of mangroves. Sorry, it's mangrove. You can see the roots. You might have studied it in your previous 12th standard. Then this is an example of lagoon. If you see this particular picture, you will be able to see that these portions, these are the portions where you can see below there is land, it is underwater but it is not completely submerged. बहुत हमको दिख रहा है ये. अगर आप यहाँ पे ये region सारा देखेंगे तो this is nothing but lagoon. Can you see this? Can you see this? The green part, this आपका water में submerged है, but these are nothing but the plants. ये plants हैं, ये lagoon area है and there are plants. अब ऐसे atolls होते हैं which are interconnected. So there is a small difference between lagoon and atolls, although this is not the forum where I will be discussing that. I will be teaching about it later on. Then this is example of coral reefs. This is Great Barrier Reef का ये example है. ये different views हैं, देखिए. You can see the submerged views of, you can see it over here or you can see it over here, that these are the corals and ये थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं और ये submerged इस area में दिख रहे हैं. So corals, and this is how the coral ecosystem looks like underwater. वो above water थी, ये above water से देख रहे थे हम, और ये हम underwater देख रहे हैं. You can see so many fishes. These are corals. This is coral. This is coral. This is coral. Whereas the fishes are different types can be seen. I hope you have understood today's lecture. If you have any doubts, any queries, please feel free to contact me through WhatsApp or my email ID, or you can also log on to my blog and share your doubts. There is a compulsory assignment which you have to appear after this, watching this video. This is the link. Please go follow this link and appear for the assignment. And again, if you have any queries, kindly contact me. Thank you.